बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। We are in the final leg now of the Karnataka election campaign. It's been action-packed, intensive, and as expected, not without serious controversy. In fact, it's in the final leg that the tone of the campaign has grown shriller, and it remains to be seen what kind of impact this has on the ground. The BJP released its party manifesto for the Karnataka elections on the 1st of May, and two promises drew much attention. One, the implementation of the Uniform Civil Code in the state of Karnataka, and second, introducing the NRC, or the National Register of Citizens in the state. See, Uniform Civil Code is for everybody, for all citizens. So they don't want equality, which is the hallmark of our constitution. So always Congress has been anti-constitutional. They say one thing and they do another. So they are against equality. The Uniform Civil Code in Article 4.4, it has been very well enunciated that the state will go towards Uniform Civil Code, and that is what Bharatiya Janata Party is trying to do, which was not done for the last 70 years by Congress, sitting idle, putting their hands down. So this has to be done, and so Bharatiya Janata Party is doing it in the best possible way. Several other state governments under the BJP have already initiated the process of bringing in a uniform civil code within their states. एक 5 सदस्यीय कमेटी हमने गठित कर दी है और हमारे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार की उनकी कार्य व्यवहार है, किस प्रकार की कार्य संस्कृति है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। और हमने पहले ही कहा था कि हम इस पर, हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था। चुनाव के बाद पहली जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, पहली शपथ ग्रहण के बाद हमने उसमें ये सर्वसम्मति से फैसला ले लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए समान नागरिक संहिता लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। आज हमने वो कमेटी बना दी है और कमेटी जल्दी ही ड्राफ्ट तैयार करेगी और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद हम उसको लागू करेंगे। However, at the central level, the government appears to be playing a waiting game right now, with the prospect of a uniform civil code currently being examined by the Law Commission. As far as the NRC is concerned, the BJP had appeared to have backtracked earlier when Prime Minister Narendra Modi in December 2019 said that there had been no talk in the government about an all-India NRC. However, in Karnataka, where occasionally the issue of Bangladeshis staying illegally has been brought up, the announcement by the BJP that they will implement the NRC drew strong reactions, with many in the opposition calling it a polarizing move. जब जब चुनाव होता है, मोदी जी के सूटकेस को वो चाबी खोलते हैं, यूसीसी लेके आते हैं, चुनाव खत्म होता है, सूटकेस वापस खोलते हैं, यूसीसी अंदर रखते हैं, ताला लगा के आराम से फिर पर्यटन पे घूमते रहते हैं। यूसीसी सिर्फ पोलराइजेशन, डिवीजन का एक हथकंडा है। Unnecessarily they are creating controversy by mentioning it, and Law Commission itself said that it's not feasible, not desirable also. The BJP, however, steadfastly defended both those announcements in their manifesto. I see no ground for any criticism, and I don't see any ground for politicizing something that would bring about equal rights between citizens of India, which is in furtherance of Article 14 also. The opposition parties that are raising questions about it are trying to politicize it and do vote bank politics. They must understand that this is part of the Constitution. The Constitution is a package. You can't say, I will like this part of the Constitution, but I'll ignore the other part, or I don't want the other part to be implemented. Country need an NRC. So Assam is an agenda which could not be fulfilled because the extremist element did not allow at that point of time to frame the rules of CA. We are not able to implement it because of the situation that we could not adopt the rules of CA at that point of time. India, for its existence,
you need NRC. So far as the Uniform Civil Code is concerned, in our country, Muslim women will always be second-grade citizen unless and until you do not have Uniform Civil Code. But it doesn't stop there. There was more controversy when the Congress party came out with its manifesto. The Congress said in its manifesto, and I quote, "The Congress party is committed to take firm and decisive action against individuals and organizations spreading hatred amongst communities on grounds of caste or religion. We believe that law and constitution is sacrosanct and cannot be violated by individuals and organizations like Bajrang Dal, PFI or others promoting enmity or hatred, whether among majority or minority communities. We will take decisive action as per law, including imposing a ban on such organizations." Stop quote. I first request them to read the manifesto, number one. Number two, the manifesto names two organizations which are extremist. They preach an extremist ideology. One is the PFI and one Bajrang Dal. So we have named two organizations. And we have not said we'll ban any organization. We will take decisive action under law. वहाँ के लोगों को क्या चाहिए, वहाँ के लोगों से चर्चा करने के पश्चात मैनिफेस्टो बनाया था। ये जो मैनिफेस्टो बना है, वहाँ के लोगों की क्या मांग थी, उस मांग को दिमाग में रखते हुए फिर हमने ये लिखा। Ban everybody who spread hate, whichever organization, whichever religion they belong. You ban PFI. At the same, you ban Bajrang Dal. You ban Shuram Sene. And which are all the other agencies, whether it is Muslims, Christians, Hindus. You all ban all of them. We welcome it. Don't be selective. When you say about PFI, your credibility would have been done if you banned Bajrang Dal and all other organizations. Whichever organizations tries to spoil this will be dealt very clearly. And the said organization Bajrang Dal is involved in violence, believes in violence, takes law into its hand, and it is on record. Congress government will deal it very seriously and very very strongly. So what is wrong in that? Why should they oppose? आज जो उनके मैनिफेस्टो में भी उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात रखी, मैं समझता हूँ बहुत ही शर्म की बात है कि एक संस्था जो प्रभु श्री हनुमान जी की सेवा में जुटा हुआ है, जो बजरंग दल बजरंग बली के नारे को लेके जनता में अपना काम करता है, उसको भी ताला लगाने की जो कोशिश आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के द्वारा करने की बात रखी, ये दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करती है। This was problematic at multiple levels. First, was there an attempt to draw a false equivalence between a banned terror outfit like the Popular Front of India and an active outfit like the Bajrang Dal? PFI's cadre have been convicted for acts of terrorism under the UAPA, and the organization itself, along with its affiliates, was banned by the Ministry of Home Affairs last year. हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है, और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। The ban was further upheld by a UAPA tribunal. As far as the Bajrang Dal is concerned, while there have been alleged acts of vandalism, assault and criminal intimidation that their members have allegedly been involved in, the organization itself is not banned. It had been in the aftermath of the demolition of the Babri Masjid in 1992 that the organization had been briefly banned by the then Congress government, but this was later overturned.
बजरंग दल एक श्रेष्ठ पूरा देश में रहने वाला एक राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन में लाखों का कार्यकर्ता ने अपने जान देने के लिए भी, इस देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। ऐसा एक संगठन को बैन करने का एक कांग्रेस का एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को कभी भी भगवान श्री राम का दूत आंजनेय का नाम से बना हुआ इस बजरंग दल का संगठन कभी भी बैन करने का कांग्रेस को नहीं होता है। Secondly, the manifesto spoke of banning organizations that spread hate. But is a state government empowered to ban an organization? Indeed, in 2018, the Jharkhand government under the BJP had banned the PFI not under provisions of the UAPA but the Criminal Law Amendment Act. The Jharkhand High Court overturned the ban, but this was reinstated by the BJP-led government there later. The detail is important because the Congress party in Karnataka would appear to indicate later that the state government cannot ban organizations, only the centre can. But this is only after the Prime Minister clearly had not taken very kindly to the reference to the Bajrang Dal in the Congress party's manifesto. कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। The BJP said this was an attempt to insult Hanuman Bhakts by the Congress party after what they described was the party's aversion to Lord Ram as well. देखिए, कांग्रेस सालों से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। पहले उन्होंने सालों तक भगवान श्री राम को ताले में रखा और अब उनको बजरंग बली के नाम से भी परहेज है। मुझे लगता है कर्नाटक की जनता इसका जरूर जवाब देगी। बजरंग बली जी को याद करना आज देश में क्राइम बन चुका है। दिस इज व्हाट द कांग्रेस पार्टी वांट्स द कंट्री टू गो टुवर्ड्स, वेयर अ कॉमन सिटीजन even remembering Lord Bajrang Bali's name should be put behind bars. This is exactly what the Honorable Prime Minister said, that for a long time they had locked up Lord Ram and now they want to lock up even people who want to say Jai Bajrang Bali. वो राम मंदिर का खिलाफ लड़े। अभी कांग्रेस बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक बोल रहे हैं बजरंग दल को बैन करेंगे, बजरंगी नहीं छोड़ेंगे, रामा नहीं छोड़ा है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी आप विपक्ष का नेता भी नहीं है, विपक्ष भी नहीं है, अधिकृत विपक्ष नहीं है कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र में। अभी कर्नाटक में ऐसे हो जाएगा, पूरा का पूरा कांग्रेस को कर्नाटक से मिट्टी में मिलाएगा। Such was the scale and magnitude of the outrage that both Bajrang Dal and BJP cadre stepped onto the streets and pledged to recite the Hanuman Chalisa as a mark of protest. हर घर में हम हनुमान चालीस पढ़ेंगे एंड कल से वो शुरू हो जाएगा। कर्नाटक में 60 इयर्स से ज्यादा वो रूल कर रहे थे। कितना मंदिर बनाया, राम मंदिर के लिए हम लड़ रहे थे, वो तो मजाक कर रहे थे। क्यों राम मंदिर नहीं बना? एंड उसका नेता कपिल सिब्बल ने राम मंदिर का विरोध किया, कोर्ट में गया, कोर्ट में वादा किया। क्यों राम मंदिर नहीं बनाया? कर्नाटक में वो कुछ नहीं करने वाले, ये केवल ड्रामा है, पॉलिटिक्स का ड्रामा है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। Well, after the Congress party in its manifesto went on to announce that, in fact, they would take action against Bajrang Dal, including possibly imposing a ban on the outfit. You have Bajrang Dal workers today in Bengaluru who've come out and protest now. We're going to, in fact, take this question straight to them and find out what exactly is it, that's troubling them and why the Congress has decided to, include this in their manifesto. अगर आज बात किया जाए कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में, आज उन्होंने कहा है कि वो आउटफिट जैसे कि पीएफआई हो, बजरंग दल हो, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। यहाँ तक कि अगर एक्शन लेना ही है तो बैन भी शायद किया जा सकता है, सर बोल रहे हैं। आज आप सब यहाँ पे प्रोटेस्ट पे आए हैं, सर ये किस कारण से? ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये शांतिपूर्ण एक विरोध है।
एक ऐसी मानसिकता का विरोध है जिन्होंने सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी को ताले में बंद किया। रामचंद्र जी बाहर आ गए, खुल गए, निकल गए, सबके सामने हैं। फिर इन्होंने कर्नाटक बजरंग बली का जन्म स्थान है और आप बजरंग दल को बैन करने जा रहे हो। बजरंग दल को बैन नहीं कर रहे हो आप। हमारे बैनर में हमारे जो बैन बजरंग दल का जो कटआउट है उसमें आप हनुमान जी की तस्वीर देखते हो। आप कहीं ना कहीं हनुमान जी को कैद कर रहे हो। So till when are we going to see these peaceful agitations by the Bajrang Dal? We are going to continue it till they withdraw their manifesto. Okay. Yeah. Till they withdraw their manifesto. manifesto. The elections are 1 week away. So do you think that they are going to withdraw the manifesto? We are hopeful. Because if they are also want peace in this country, they have to withdraw it. Okay. This is because we are peace-loving people. We don't want any this thing. We'll peacefully sit on a dharana or a protest. We are not creating any nuisance to the public. Well, there you had it. Of course, the protests over here continue, the peaceful agitations continue, but we'll really have to wait and see as to where there is an end to this in Karnataka. Very evidently, it is going to be caste and communal politics that's going to take center stage, even as development has been affected. All political parties choosing to use sensitive, emotional issues over here to fight the elections. There's been confusion in the Congress camp. Immediately after the Prime Minister's remarks, as well as the reaction that followed, the Congress appears to be backtracking. इन्होंने जानबूझ के ये बजरंग बली के नाम का, राम के नाम का राजनीति करते हैं। हम सबके हिंदुस्तान के लोगों के लिए आस्था के केंद्र है, चाहे वो राम मंदिर हो और चाहे वो बजरंग बली हो, ये हमारी आस्था के जुड़े रहे हैं। ये लोग उनके नाम की राजनीति करते हैं, धीरे धीरे लोग समझ गए। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे करा दो और वोट ले लो। हम बजरंगबली के भक्त हैं, कांग्रेस हमें बता रहे हैं क्या ये? आप मुझे ये बताओ। हम रोज पूजा करते हैं, हम हिंदू हैं और हम राम के वंशज हैं। किसी कांग्रेस के हिंदू से मुसलमान को तकलीफ नहीं है, सिख ईसाई किसी को तकलीफ नहीं है। बीजेपी के जो बड़े बड़े हिंदू हैं, बड़े बड़ी गलतफहमी पाल रखी हो, आ जाए कौन सी पूजा उनको आती है मेरे मुकाबले, कौन से धर्म पे बहस करनी है। Former Union Law Minister Veerappa Moily, who is also a senior congressman and former Karnataka Chief Minister, said that the state government can't ban an organization and this is within the centre's remit. See, there is no issue at all. It is the issue before the Supreme Court. They observe that anyone who violate the rule of law, go against the Constitution of India, who through hate crime they punish other people and harass people, suo motu case will have to be filed. When the Supreme Court has given that direction, each state will have to examine this in this background. D.K. Shiv Kumar, the Congress chief in Karnataka, visited the Chamundeshwari temple and paid his respects to Lord Hanuman. He then addressed the media and said that the Congress party reveres Lord Hanuman and that if voted to power, it would set up institutions to oversee the renovation and constructions of temples in Karnataka. ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರೂಪಿಸ್ತದೆ. ಆಂಜನೇಯನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಆಂಜನೇಯನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸ್ತೇವೆ. Indeed, in 2022, the Karnataka government under the BJP had instructed authorities in the state to redevelop a temple site at the Anjaneyanadri hill, believed to be the birthplace of Lord Hanuman. बजरंग बली की, बजरंग बली की।
What has also drawn controversy is the Prime Minister asking voters to chant Jai Bajrang Bali after casting their vote. The Congress party has taken exception to this, even approaching the Election Commission claiming that this violates the Model Code of Conduct. इस बार क्या करोगे? क्या करोगे? सजा करोगे? गाली देने वालों को सजा करोगे? बराबर जम करके सजा करोगे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको. In this last leg of the Karnataka poll campaign, many believe that the Congress's reference to the Bajrang Dal in its manifesto and its floating the idea of a ban represents an inflection point that may turn the tide in favor of the BJP, which has been facing anti-incumbency. We will know if this is indeed the case on the 13th of May when the results are announced.